Yes, sir. Okay, today we'll be speaking something in general, but we are moving particularly towards our target, that is of achieving success in National Defense Academy exam. Yesterday we saw SPI result. Some of you gave that exam. Very few could pass, but I would like to say we should be very clear in our mind that SPI is a gateway to NDA, not NDA. We should be very focused that my mission is NDA. By any method, by any means, I am going to achieve my aim. So that should be very clear to you. If you are making it to SPI, that is okay. And if you are not making it to SPI, NDA is not yet over. We should focus ourselves towards NDA. Those who could make it in the written exam, they will very soon face the interview. We shall be guiding them for interview also. But then those who have not made it to SPI, what is the way ahead? That I will be talking today. Firstly, when you are chosen the aim of NDA, that means you are a fighter by nature. You are a soldier within your heart. You are willing to take responsibilities and willing to take challenge. You are little different from the surrounding. You are a person who thinks, who can serve the nation in an extra way. So this belief system, you should let it continue. It should not die down. Road is difficult, but not impossible. When we talk about NDA, if you are in 11th or in 12th, if you are in 12th, I am talking for both the students. Some of the students who will be joining us will be of 12th also. So for them, this coming September is a first chance. And those of you who just finished your 10th, next September 2025 is your first chance. So if that is so, we must make a roadmap. And before that, let's talk when you are heading for NDA, what are the objectives? I said aim is NDA. And there are sub aims, and we will call it the objectives. National Defense Academy is a tri-services academy where the military officers are getting trained. The cadets in 3 years of training are getting transformed from boys and girls to the gentlemen cadets and then military officers. But before we reach NDA, there are some steps we have to cross over them. First is the written exam. If we have seen in SPI, which is just glimpse of that exam, larger exam of NDA, SPI is different. Please mark my words. SPI is different, primarily revolves around your basic talent which you achieved till 10th. Immediately you appeared in SPI, there was a very less preparation time. Some of you got to know that exam at a short notice. Someone told you, fill up this form, it is good, and you filled. And you got tested on your basic knowledge. You might not have prepared well, or if you have prepared well, you could not reach to that level. But when it comes to now NDA, UPSC will conduct exam, 300 marks of maths and 600 marks of GAT. If 300 marks of math, you should know the syllabus. There are roughly 31 chapters, and when it is 600 marks of GAT, then there are 3 subparts: English, General Science, and GK. So 200 marks each.
Now you come to a stage where you decide what is your cutoff score. Your cutoff score is generally, safe score is 350 plus. But should you be aiming at 350? No, absolutely no. You should be aiming at 500 plus. And you should have a strategy to reach that goal. 500 marks plus is not easy if you don't plan. And if you plan well, you can achieve it. And 500 plus, 550 plus is a very high score. You will be generally in high merit. Because those of you who want to join Indian Air Force, Indian Navy, Indian Army, different services have got different cutoff. So you should go for your first lighting. And for that, you should have a high score. Nobody can deny you from reaching your first objective, your first dream. There are some students who naturally like Indian Army. They have a passion. But some students, they want to be pilot. Some students want to go into Indian Navy. And they have fascination for that. So whatever is your aim, you should be in top rank. And if you make a good plan, nothing is impossible. So if you are joining SPI or not SPI, you can be from any platform. I will give you a couple of examples. There is one student, Ishan Patil, who is in now fifth term of NDA. Ishan Patil had cleared SPI and joined SPI. But for his personal reasons, he left SPI. And later on, he realized he should not have done that. He made a mistake. So what happened? He refocused on his objective because SPI, once you come out of SPI, don't accept again. So he was denied permission to join SPI because he had left. So what he did, he took it as a challenge. Now I am not in SPI, I will clear it. And he cleared it. What I mean to say, I am giving you first example that a person who joined SPI but left in first or second week and still is in NDA. And there are many examples who did not make it to SPI or even did not give SPI. But every batch, there are so many students who come from plain background. One student, Harshvardhan Patil, missed SPI, was very unhappy. He and his parents, after the result of SPI, met me. And we discussed similar thing like today we are discussing. Those of you who are unhappy, बहुत दुखी है आज कि मेरा एसपीआई नहीं हुआ है, उससे क्या होता है? डजंट मैटर. आपका अगर एम है, इफ यू आर रियली डिटरमाइंड टू अचीव योर एम, तो आप कर सकते हैं. सो अभी मैं 11th के बच्चों की बात कर रहा हूं, विच इज एप्लीकेबल टू 12th आल्सो. सो व्हेन यू आर डिसाइडिंग, लाइक हर्षवर्धन एंड हिज पेरेंट्स गॉट कन्विंस्ड, ये कर सकते हैं. And he cleared SPI after the SPI failure, cleared NDA in first attempt, written also, SSB also. So what I mean to say that if you are ready, who should be ready? The candidate should be ready. Then nothing is impossible. So let's talk from SPI or from any other platform. Your aim is NDA, you can do it. Now, when you want to achieve that, you should be very systematic and focused. And why I'm talking only in English now? Because that is also is your requirement to fulfill. Start speaking more in English. आपको बहुत ज्यादा अभी अपने आप को फोकस रखना है और उसके सभी स्टेजेस को अभी से ही टारगेट करना है. फर्स्ट स्टेज इज रिटन. जस्ट नाउ यू सॉ इंग्लिश क्लास.
Yes, sir. Okay. Sir. Yes, sir. Okay. So far, so good. Any doubt? Because I should be very clear whether I'm really connected to you. You are really understanding what I mean to say. Because very systematically we will make a roadmap, and you should be very clear that where are you heading. सब कुछ समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाहता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. 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 Now, coming to the next part, when we say that, just a moment, our syllabus, our target, score target, if it is 500 plus, then how much in maths, depending upon each student's own strength. If someone is very good in math, can really aim 150 plus. There are some students who score that. If we will take one student whose maths is very strong, if that student is making 175 or 150 as a target in math, now in GAT, that student will score 350 plus and reaches 500 plus. But there is another student who is not so good in maths, finding difficulty, and very practically he or she is thinking, okay, I am not very good in maths. I will set a target of 100, minimum 100. Anything bonus, anything plus is good. So if that student is very practically sensing it, I am scoring minimum 100 here. So GAT, I need to be very strong because something will be strength for you. Something will be good. Individually, someone's science is good, someone's English is good, someone's math is good, someone's GK is good. You need to find out your own strengths. And accordingly, if someone is setting a target of math as 100, that student may be getting 120, 25, 130, but setting on a defensive side 100. And other side, GAT, now that student requires 400 out of 600. In that also, English out of 200, how much? Science out of 200, how much? And in GK out of 200, how much? Very systematically, you are setting your own checklist and targets, and you will achieve it. Now, coming to the next, if you are gone through syllabus, now comes the scheduling. You must be knowing how many months are there before your exam, how many weeks are there, how many days are there, and how many chapters are there. Allot how many days, how many weeks for syllabus wise. This chart should be very systematic in your mind, that by this month I am finishing this syllabus. Suppose, for example, we will take a student of 11th. September 25 is your first attempt. Before that, you got 11th syllabus, 12th syllabus. Now you are very systematic that I will not set cutoff date very near to the exam. I will set exam syllabus finishing by June 25. Now July, August is your revision. Ideally, you should have some revision space also. So you are focusing there. Now coming to the 12th student who has got now first attempt in September. You have to reduce that scale. Another 4.5 months are there. You should be coming down to that zone. Okay, 4.5 months, how much you have covered, how much is left, and within that also, if you can reduce 15 days, last 15 days only for revision or solving those areas which are very difficult, you are very uncomfortable. This is how systematically you must plan, because these are essential qualities which will be checked in second stage also. Because theory is one aspect, your written exam is one aspect where you have got a lot of support system. Your teachers are there, your friends are there, you can discuss. But now coming to the next stage, which is services selection board interview, where 5 days you are going to get tested from 3 angles. One is group testing officer, another is psychologist, and third one is personal interview officer. So what is the requirement?
you need to stand true on 15 officer-like qualities. If you are passing the exam of SSB, if you want to call that exam as typical exam, I call it as a sports kind of thing. You go there and play your personality. And we will be guiding you for that process. And it should start right now if you are not started. Because you cannot prepare within a short period of time for such kind of test. Your personality is getting tested. Your communication skill is getting tested. When I call it personality, your attributes of your character, the way you think, the way you conduct, your confidence, your inner qualities are getting tested. What kind of person you are. So for that, there is a procedure. In military schools, it happens. There are a lot of qualities which automatically get set because of the routine and the system there. So when we say SSB, you should be very clear that it is not only my written exam, but simultaneously I have to prepare for my interview also, which is very different from other interviews. Nowhere else you will see such kind of 5-day procedure. So you should be very wise to start now only. And how to start? I will give you an example. I said you should speak more and more in English. So how to do that? You may have a friend, you may have some family member, you may have someone in your area with whom you are comfortable, and daily basis you start speaking in English. How much to speak? 5-10 minutes to start with? Enough. Within a week or so, you will be comfortable and naturally you will be opening up. A start of 2 minutes within a week will naturally open up and you will be naturally speaking 5, 10, 15 minutes. I'm talking about opening up. The second related aspect is listening. How to do that exercise? In the morning, I was listening Pankaj sir. He was telling you, start listening news. Start reading newspaper. Of the 24 hours, you should have a schedule. In that, at least half an hour, you should give to reading or listening to news. What you will achieve? You will achieve two aims. One is for your written. As such, you have to prepare for GK. Not only that, you are aiming to become an officer, you should have knowledge. And from where that knowledge will come? Book knowledge is different. There is a knowledge of your surrounding, the district you are from, the state you are from, the nation you are from, the world you are from, and the universe. How that knowledge will be gained? Is it possible that you glance through a book and you get it, general knowledge? No. It is a very systematic process. If you inculcate a schedule which will give you small bits of information on a daily basis, mark my words, you will be a very knowledgeable person one day. So it has to start reading newspaper or listening news on a daily basis. Every day. I will give you an example. Today, suppose election is going on or election kind of scenario is going on in India. You read every day small bits and another 10 days down the line, you get a picture what is happening in India. Suppose there is some international talk between two nations. You read a news today, you read a news follow-up tomorrow. You get a fair idea what is happening between these two nations. Suppose there is a Russia-Ukraine war. One day you watch a documentary, you get idea. That is not a complete knowledge. Every day you, by the virtue of reading news or listening to news, every day you get update. And that is the correct knowledge. You are in touch with that scenario. So this good habit should start now. You must get acquainted, get familiar with world affairs. Either through reading newspaper, good newspaper,
or through listening news. My recommendation is you must listen to All India Radio News and wise management of time while eating or while doing some kind of other thing. You develop a habit. You are listening to All India Radio News on a daily basis at same time. If I am not wrong, very periodically within a day schedule, every 1 hour or 2 hour, you get that All India Radio News in English. Develop that habit, listen to it. Some of you who are very poor in English, तो आपने दोनों लैंग्वेज में सुनना है, बिकॉज बैक टू बैक है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी। तो आप इंग्लिश का और हिंदी का दोनों सुनो कुछ दिन, आपको दोनों न्यूज, एग्जैक्ट न्यूज वो दोनों भाषा में मिलती है, और आप शुरू के हिंदी के बेस पे इंग्लिश वाला भी समझ जाओ. So develop some kind of methodology to prepare yourself. Second point, because इसमें रिटर्न का भी हो रहा है और आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपकी इंग्लिश इन अ सबकॉन्शियस माइंड यू आर डेवलपिंग, बट वो डेवलप फास्ट होगी जब आप 5 मिनट कम से कम ये जो सुना हुआ है इसको बोलो. आपने बातचीत करनी इंग्लिश में विथ योर फ्रेंड, इफ नॉट इन नेबरहुड, इफ नॉट इन फैमिली, मेक अ फोन कॉल टू योर फ्रेंड विथ हुम सिमिलर काइंड ऑफ एम जिसका है, एनडीए रिलेटेड कोई फ्रेंड है, उससे बात करो. आप डेली सिस्टमेटिक शेड्यूल बनाओ कि डेली हम 10 मिनट इंग्लिश में बात करेंगे फोन पे. टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग करो. Another small exercise I will recommend today onwards, lecturate, which is one of the test in SSB. 3 मिनट्स आपको टॉक करना है अलग अलग टॉपिक पे. तो ये शुरुआत अभी से ही करोगे तो आपका एसएसबी का ऑलमोस्ट मोर देन 50% प्रिपरेशन हो गया, बिकॉज एसएसबी रिवॉल्व्स अराउंड योर कम्युनिकेशन स्किल, योर राइटिंग स्किल. तो आपको अभी से ही 3 मिनट वाला लेक्चरेट डेली करना है. ऑलमोस्ट डेली करोगे तो बहुत बढ़िया, वीकली 4 बार करोगे तो बहुत बढ़िया. और आज मैं अनाउंस कर रहा हूं कि हम लोग इसी प्रोग्राम के दौरान कुछ लेक्चरेट सीरीज मैं कंडक्ट करूंगा. आपको प्रिपेयर होके आना है और 3 मिनट की बात करनी किसी भी टॉपिक. टॉपिक्स कौन से? एसएसबी में जो पूछे जाते हैं अलग अलग सेक्शन से. आपको 4 टॉपिक का एक कार्ड मिलेगा उस टेस्ट के दौरान, और उसमें से एक पे आपको बात करनी है. So how to prepare for that? So firstly, you must know what kind of topics are there, from which all areas they are covering. They are from your personal life, personal space to international space. Technology is covered, international relations are covered, social issues are covered, current burning topics are covered, some emerging technological issues are covered, military topics are covered. For example, I will give you some general topics: women empowerment, child marriage, problems in agriculture, farmer suicide. These are very general topics. Now come to little technological topics. Solar energy. You must have little knowledge about technology also and current updates, where the India is standing in solar energy. Atmanirbhar Bharat. Very general topic, yet requires a lot of data. Missiles in defense forces, ISRO. Then comes nanotechnology. These are all technology oriented. Coming to very, very society oriented, social media. Pros and cons of mobile. These are affecting our society today. Coming to current topics, Russia-Ukraine war, Israel-Palestine war, election 2024, general election 2024. These are topics. Some international interest topics: Indo-US relation, China-US trade war, India-Pakistan relations, Indo-Bangladesh relations, Maldives and India's issues. I am telling you just glimpses. There is one social YouTube channel where we interact, Scholar Warrior.
देयर ऑल दिस टॉपिक्स विच आर देयर ऑलरेडी इन एसएसबी, वो कार्ड्स भी बनाए हुए स्कॉलर वॉरियर पे। आपको एसएसबी ओरिएंटेड टॉपिक्स की बातें करनी है पर डे। यू मस्ट डेवलप दिस हैबिट। साइमल्टेनियसली आपको 10-15 मिनट इन्वेस्ट करने हैं आपके सेकंड स्टेज के लिए, बिकॉज विदाउट विच आप नहीं कर पाओगे। रिटर्न तो हो जाएगा, लाइक एसपीआई का रिटर्न हो गया, देयर इज अ मॉक इंटरव्यू। और कितने लोग होने वाले फाइनली एसपीआई में? 300 लोग लगभग उन्होंने बुलाया है अभी इंटरव्यू के लिए। और बहुत जल्द इलेक्शन को देखते हुए इंटरव्यू कुछ डिस्ट्रिक्ट में 3 दिन के अंदर शुरू होगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट में 8 दिन बाद होगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट में 15 दिन बाद होगा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, छत्रपति संभाजीनगर, गेट प्रिपेयर्ड, मंडे इंटरव्यू होगा, वेरी शॉर्ट नोटिस पे इंटरव्यू होगा, बिकॉज इलेक्शन को देखते हुए, इलेक्शन डेट्स को देखते हुए ये इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं, बिकॉज देर आर अदर ड्यूटीज टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो जो पैनल होगा उनके अदर ड्यूटीज भी है। तो व्हाट आई मीन टू से कि अब एसपीआई रिटर्न के बाद 5 में से एक ही बच्चा एसपीआई पहुंचेगा। तो इमेजिन एनडीए, आपने रिटर्न 1.5-2 साल मेहनत करके क्लियर कर लिया, लेकिन क्या फायदा, आप इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं, आप फिल्टर हो जाओगे। तो डोंट डू दैट मिस्टेक। आपको अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी करनी, अभी से ही हर दिन 3 मिनट की बात करनी। जो आपने दिन में न्यूज सुने उसमें से डेटा, एक बड़ी नोटबुक तैयार करिए, और आपने उसी में डिफरेंट सेक्शंस बनाने हैं डेटा बनाने के लिए। सोशल टॉपिक्स का डेटा अलग, कुछ पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा, कुछ अपने जीडीपी रिलेटेड डेटा, कुछ स्टेट के रिलेटेड डेटा। आपको कहीं पे भी स्मार्टली यूज करना आना चाहिए। फिर कुछ यूएस का डेटा, कुछ चाइना का डेटा, श्रीलंका का डेटा, डिफेंस, अपना डिफेंस का डेटा, विद इन दैट ऑल्सो आर्मी का डेटा अलग, एयरफोर्स का अलग, नेवी का अलग। आपको ये इंटरव्यू में भी काम आएगा और आपको जीके के पेपर में भी काम आएगा। आपको बहुत सिस्टमेटिक ये नोटबुक बनानी है जो आपका जीवन साथी बनेगा। आज जो नोटबुक बनाई है वो तो जिंदगी भर काम आएगी। तो ये डेटा बिल्डअप एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 3 महीने बाद आपकी नोटबुक बहुत भर चुकी होगी, और आपका वो गोल्ड माइन है, उसी में से आपको बहुत सारा डेटा इंटरव्यू में भी काम आएगा और आपके रिटर्न में भी काम आएगा। बिल्डअप अ गुड नोटबुक। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत लंबे लंबे मत लिखो, पॉइंट फॉर्मेट में लिखो, क्योंकि लंबा लिखोगे तो बहुत ज्यादा मटेरियल बनेगा जिसको पढ़ने को मन नहीं करता। प्रिसाइज नोट बनाइए, डेवलप दैट हैबिट। वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपको अभी से ही करनी है। एक छोटा सा वर्ड है लेकिन उस पर आप 1 घंटा बात कर सकते हो। ये हैबिट आपको एक दिन डेवलप करनी है। ओके, तो ये अभी से ही करना है। 3 मिनट लेक्चरेट जो मैंने बोला, ये आपका क्रक्स है टुवर्ड्स द सेकंड स्टेज ऑफ योर एनडीए मिशन। प्लीज डू दैट। नाउ कम्स आपका एसएसबी का, तो डिटेल में हम कवर करेंगे। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती है, प्रिपरेशन कैसे करना है, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, फिर आपके इंटरव्यू ऑफिसर के पास क्या प्रोसीजर है, टीआईक्यू एक फॉर्म होता है वो क्या है, कैसे भरना होता है, इंटरव्यू ऑफिसर उसके बेस पे कैसे पूछता है। ऑल दोज थिंग्स वी विल गेट इट डन फ्रॉम यू, डोंट वरी। एसएसबी आपका रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद एक रिवीजन की तरह हम आपके रिटर्न एग्जाम के और इंटरव्यू के बीच में करेंगे। जैसे अभी एसपीआई के बच्चों को हम इंटरव्यू को गाइड करेंगे, वैसे एसएसबी का गाइडेंस करेंगे। लेकिन गाइड कौन हो सकता है? जो प्रिपेयर्ड है। वो प्रिपरेशन मैं आज समझा रहा हूं आपको, फर्स्ट स्टेज का भी, सेकंड स्टेज का भी, और एक छोटी थर्ड स्टेप है उसका भी प्रिपरेशन करना है। बहुत डिटेल में हम आज, तो मैं संक्षेप में बता रहा हूं। थर्ड स्टेज है मेडिकल। आपका मेंटल फिटनेस एसएसबी प्रिपरेशन में हो गया, हो रहा है, लेकिन आपका फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हफ्ते में 4 दिन कुछ फिजिकल एक्टिविटीज आपको रूटीन में रखनी है। ये नहीं कि पढ़ाई कर रहे हो जेई और नीट की तरह और आपको और कुछ पता ही नहीं है दुनिया में, ये नहीं चलेगा। आपको अगर बेहतर अपने आप को बनाना है, आपको बैलेंस रखना है बॉडी और माइंड का, तो आपको कोई एक्टिविटी करनी है जो फिजिकल है। I will recommend, if you can spare 40 minutes for your morning run. रन मतलब आप शुरू में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दौड़ते हैं, एक दिन आप 3 किलोमीटर दौड़ोगे, आ गए, थोड़ा सा पुशअप किया, सिटअप्स किया, बस। कोई ज्यादा जिम जुम करने की जरूरत नहीं।
आपने अगर ये भी रूटीन किया तो आप ओवरवेट नहीं होंगे, जनरली अंडरवेट नहीं होंगे, आप फिजिकल शेप में रहोगे, आप मेंटली भी फिट रहोगे, आप फ्रेश रहोगे, आप मोनोटोनस रूटीन में नहीं रहोगे और आपका बैलेंस रहेगा। आप बहुत ज्यादा चार्मिंग नजर आओगे। आपको आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट फिजिकल पे रखने हैं। किसी दिन साइकिल चला ली, किसी दिन दौड़ने गए, पुशअप्स, सिटअप्स, इतना बहुत है। हल्का सा एक्सरसाइज ग्राउंड पे जाके, घर में नहीं, आपने करना है। और जो थोड़ा बहुत हमने एसपीआई में मेडिटेशन वाला भी एक एंगल आपको समझाया है एसपीआई प्रिपरेशन में, वो भी आप 5 मिनट शांत मन रख के अपना रिव्यू कर सकते हैं पर डे। डेवलप दिस हैबिट, तब जाके आपका मेडिकल भी इजी हो जाएगा। ओके, तो ये जो मेडिकल, एसएसबी एंड एनडीए रिटर्न, ये तीनों आपको साइमल्टेनियसली एड्रेस करने। ओके, नाउ आई टॉक अबाउट who will clear this exam. Ideally every student thinks कि मैं तो हो गया, मैं हो जाऊंगा, लेकिन होंगे कौन? होंगे वही जो बहुत सिस्टमैटिकली, प्रोएक्टिवली, आई एम रिपीटिंग अ वर्ड, प्रोएक्टिवली। एक होता है रिएक्टिव, कि एग्जाम सर पे आ गया तब हम पढ़ रहे हैं। एक होता है प्रोएक्टिव। अभी 12th के बच्चे, ऑलरेडी उनका 11th खत्म हो गया है या 12th भी खत्म हो गया है। आई सी वन ऑफ द स्टूडेंट हियर हु हैज जस्ट फिनिश्ड 12th आल्सो। नाउ नेक्स्ट अटेम्प्ट इज September. You should be wise enough कि 4 महीने में मुझे अपना अचीव करना है एम, एंड आई एम टेलिंग यू पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। सिमिलरली 11th के, उनके पास 1.5 साल है। जो अब 12th अपेरियर है, उनके पास ये सितंबर प्लस अप्रैल भी हम काउंट करेंगे कि चलो कोई बात नहीं, 6 महीने लेट। आइडियल तो सितंबर वाला है, हो गया तो आपके बिफोर 12th आपका रिजल्ट तैयार है और आप एनडीए के लिए तैयार है। लेकिन कोई बात नहीं, 3 या 4 अटेम्प्ट में भी जब करते हैं तो आप एनडीए में पहुंच गए, बहुत है। लेट पहुंचे लेकिन कोई बात नहीं, लगभग 3 या 4 अटेम्प्ट हर एक को मिलते हैं। लेकिन उसमें पहले अटेम्प्ट की मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ बिकॉज दैट इज प्रोएक्टिवनेस। रिएक्टिवनेस इज जो हमारा नेचुरल स्वभाव होता है, हम रिएक्टिव होते हैं। हमें जब समझदारी शुरू होती है, हम जब वाइज बनते हैं, तब हम प्रोएक्टिव बनते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग इज वन ऑफ द ऑयल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में ये सब आते हैं। इनिशिएटिव, प्लानिंग, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, ये हर चीज हम आपसे वर्कआउट करेंगे, आपको समझाएंगे, आपसे कुछ एक्टिविटीज करेंगे। जो मैंने आज बोला, अगर ये शेड्यूल किसी ने बनाया और ये करने लग गया, आधे क्वालिटीज तो वहीं कवर हो गए, आपने अमल में ले आए। व्हाट इज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज? वो थ्योरी में पढ़ के नहीं, द वे यू लिव योर डे एंड यू क्रॉस चेक कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही है। ओके, आई थिंक हमें फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा अनदर 2 to 3 मिनट्स में। वी विल अगेन रिकनेक्ट। बट एनी डाउट सो फार? कोई भी सवाल अगर आपका है, आज हम उसको एड्रेस करेंगे और हम अपना रोड मैप बनाएंगे। आई एम टेलिंग यू, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास, कम उम्र में क्लास 1 ऑफिसर बनना एंड अपना सपना पूरा करके यूनिफॉर्म में पहुंचना। यूनिफॉर्म एक चार्म है। यस, शिवम इज स्विचिंग ऑन माइक, एनी डाउट? हेलो सर, यस, अगर हमारा सुपर 30 में सिलेक्शन नहीं होता तो हम ऐसे आ सकते हैं? क्वेश्चन थोड़ा जोर से पूछो।